हे व्हाट्सअप, एक गेमर 99 फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। दोबारा हम खेलने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट गेम RDR 2, आई मीन रेड डेड रिडेम्पशन 2। और जो बंदा इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो मित्रों जल्दी से अब फर्स्ट पार्ट देख के आओ, नहीं तो ये वाला पार्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकता है। सो मित्रों ये वाला पार्ट थोड़ा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड इस वाला पार्ट में आप लोगों को फाइट सीन भी देखने मिलेगा। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखा था। पहले तो डच की गैंग जो पोसेशन से भाग रहा था क्योंकि ब्लैक वाटर नामक एक जगह पे डच की गैंग चोरी का अंजाम देने जा रहा था, जो फेल भी हो गया था। तब मौसम भी बहुत खराब था और डच की गैंग में से कुछ मेंबर घायल भी था। तब इन लोगों को एक प्लेस चाहिए था जहाँ पे ये लोग आराम कर सकते हैं। तो इस गेम का हीरो जिसका नाम है आर्थर मॉर्गन, जिन्होंने एक पुराना घर ढूंढा था जहाँ पे ये लोग कुछ देर रह सकता है। बट उसी जगह का आसपास डच की राइफल गैंग जो कि घूमते हुए दिखाई दिया था और उसी गैंग का लीडर का नाम है कॉम ओड्रेस। और उस गैंग का एक बंदे से ये भी पता चला था कि वो लोग एक बहुत बड़ा ट्रेन को लूटने वाला है। तो अभी वही देखेंगे आगे होने क्या वाला है। तो गेम में बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बकचोदी होने वाला है। आप लोग फुल वीडियो देखो और मजा लो गेम का। और जो बंदा नया है इस चैनल में उसको वेलकम टू आवर फैमिली। तो मित्र आप लोग खाने पीने का चीज लेके बैठ जाओ, मेरे लिए भी लेके आना, अकेला मत खाना। तो शुरू करते हैं। तो कुछ हफ्ते बीतने के बाद मौसम अभी भी सेम ही है। ऐसे तो इस गेम का साइड मिशन बहुत ही अच्छा है, मैंने ऐसा सुना है, बट फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई साइड मिशन नहीं मिला है। फिलहाल मैप में दिखाई दे रहा है बी और पी में कुछ मिशन वगैरह दिया है, तो अभी फिलहाल वो कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम पी वाला मिशन करते हैं। अच्छा, इसके नाम पियर्सन है। इनका कहना है कि शायद हम लोग यहाँ पे भूखे ही मर जाएंगे मिस्टर मॉर्गन। We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? सो आई थिंक पियर्सन इस गैंग का कुक है, आई मीन सेफ भी बोल सकते हो आप लोग। तो आप लोग देखा है गैंग में बहुत सारा मेंबर है, बट फिलहाल खाने पीने का चीज कुछ भी नहीं है। तो आर्थर एंड चार्ल्स शिकार करने के लिए जा रहा है, बट आर्थर ने चार्ल्स को मना कर दिया था क्योंकि उसका हाथ घायल है ना। Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn. तो इस शिकार के लिए हम लोग को तीर और धनुष यूज करना पड़ेगा। चार्ल्स ने अभी आर्थर को बताया कि तुम गान यूज मत करना क्योंकि गान का आवाज सुन के दूर दूर तक जितना भी जानवर होगा सब भाग जाएगा। चार्ल्स ने ये भी बताया मेरी हाथ घायल है तो फिलहाल तीर धनुष तुम चलाओ, और चार्ल्स तीर धनुष यूज करना सिखाएगा आर्थर को। How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Oh, watch it. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but
It sure weren't good. तो चार्ल्स को भी पता नहीं ब्लैक वाटर में जो कांड हुआ था वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। आर्थर ने बोला मुझे जेई बार थोड़ा सा बताया कि वहाँ पे हुआ क्या था और उससे इतना तो पता चल गया कि वहाँ पे जो भी हुआ था अच्छा तो नहीं हुआ। चार्ल्स ने बताया कि उनका कोई छोटी सी भूल से उसका हाथ घायल हो गया तो फिलहाल वो तीर धनुष इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आर्थर ने बताया कि चलो मैं ही यूज करूंगा और मैं पहले भी इसको यूज कराऊं बट मुझे उतना खास इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो चार्ल्स ने आर्थर को समझाया कि नहीं तुम कर लोगे इससे शिकार। भले ही पियर्सन ने बताया कि यहाँ पे शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों को कुछ तो मिलेगा क्योंकि मौसम शांत पड़ रहा है और गैंग को खाने का जरूरत है। तो दोस्तों एक फनी बात बताए, आर्थर आने से पहले पियर्सन को बोल रहा था हम लोग को खाने का चीज कम पड़ जाएगा तो हम तुम्हें खा लेंगे क्योंकि गैंग में से सबसे मोटा तुम ही हो। और पियर्सन के बारे में हम लोग को ये भी पता चला कि वो पहले नेवी में था और मुझे ये भी जानना है कि वो नेवी से हट के गैंग में ज्वाइन क्यों See किया। some of the ground uncovered here. Let's look down this way. तो चार्ल्स ने बताया कि शायद यहाँ पे आसपास जानवर हो सकता है। The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. और चार्ल्स ने ये भी बताया कि तूफान बहुत तेज हो गया ना तो जानवर उसकी जगह से हिलेगा नहीं और आर्थर को खामोश रहने बोला है। Hey, stop here a second. I see something. लगता है चार्ल्स को कुछ देखने मिला है। सच बता रहा हूँ दोस्त, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दिया? There's deer been here recently. चार्ल्स समझ गए यहाँ पे कोई डियर था। How can you not? We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Come on. तो आर्थर को नहीं समझ में आया कि चार्ल्स को कैसे पता चला कि ये डियारी है पैरों के निशान से। तो चार्ल्स बोलता है तुमको नहीं समझ में आया? तब आर्थर बोलता है नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है और अभी धनुष लेके आना होगा क्योंकि चार्ल्स ने बताया कि यहाँ पे गान इस्तेमाल करना नहीं जाएगा। Quiet as you can. Stay low and move slowly. तो डियर का जो पाँव का निशान है ना उनको अभी फॉलो करना है और धीरे धीरे जाना होगा। You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. हो ईगल आई ऑन हो चुका है भाई, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज है। निशान फॉलो करने में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well. चार्ल्स कह रहा है कि इस सोनो में से आसानी से मैं ट्रैक कर लूंगा भाई। इस सोनो के वजह से और कुछ चमक तो और दिखाई ही नहीं दे रहा है। और आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है ना? एक्चुअली जो लाइट चमक रहा है वो भी व्हाइट का ही है और स्नो भी व्हाइट का ही है, लेकिन गेम का जो ग्राफिक्स है ना भाई इतना सुंदर बना है कि मुझे ऐसे भी पाव का निशान नजर आ रहा है। इस गेम को इतना रियल बना दिया है कि आर्थर का बदन से जो महक वो भी हवा के साथ उड़ेगा, जिससे एनिमल को भी पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई है। तो हम लोग को ज्यादा पास नहीं जाना है, दूर से ही धनुष चलाना होगा। You see him? चार्ल्स देख लिया। Ready with that bow? और हम धनुष को ज्यादा देर खींच के रखेंगे ना उससे हमारा स्टैमिना भी घटता है। इतना रियल बना दिया है। हेल्थ के पास जो सिंबल है ना वही स्टैमिना का सिंबल है। अच्छा, लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है कि जानवर की तरफ एम करके उसको सीटी बजा के खुद के और भी पास लेके हम लोग एक क्लीन किल ले सकते हैं। वाओ, ये तो मस्त है। अभी हमको और एक शिकार करना है, चार्ल्स ने बोला है। अच्छा, ये तीर भी हम उठा सकते हैं, बढ़िया। ओके ऑलराइट, और एक शिकार मिल चुका है हम लोगों को। और एक बात, एनिमल के जितना पास जाएंगे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एक्चुअली इंफॉर्मेशन मतलब वो कौन सा एनिमल है। वाह, तुम्हारा भाई पीरो है, पटाख से हेडशॉट। I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. ओके ऑलराइट, 2 शिकार कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अभी इस दोनों शिकार को लेके जाएंगे घर। तो आर्थर ने चार्ल्स को बताया कि तुम एक शिकार को उठा सकते हो क्या, क्योंकि तुम्हारा हाथ घायल है ना। तो चार्ल्स ने बताया मैं कंधे पे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ओ अच्छा, घोड़े को हम लोग सीटी मार के खुद के पास बुला सके, वाह बहुत बढ़िया। और एक बात, एक रेंज तक सीटी मार के हम उसको बुला सकते हैं, बट जितना हम घोड़े का ख्याल रखेंगे धीरे धीरे वो भी रेंज बढ़ जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर कर देना दोस्त। और जो बंदा अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो भाई? पीट डाउन बेबी, पीट डाउन कर दो यार, तुम लोग कर सकते हो। 80,000 का सुई यार चप्पल से मारो, बस होना चाहिए। तो इस 2 शिकार को पियर्सन के पास देना है कि गैंग को कुछ खाने को मिल गया है, वो खुश हो जाएंगे। ओ अच्छा, गैंग का सप्लाई भरना है तो हम लोग पियर्सन को जाके लाशें देना होगा। Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We'll still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. आर्थर बोल रहा है डच और होशिया का ऊपर पूरा एकी ने यहाँ से निकालने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर किया है। You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons. तो आर्थर चार्ल्स को बता रहा है कि डच एंड कॉमोडर्स की दुश्मनी बहुत पुरानी है, दोनों जान की दुश्मन है। कॉमोडर्स गैंग के साथ पंगा इन लोगों का बहुत पहले से ही चल रहा है। और चार्ल्स सीरी के बारे में भी बोल रहा था, जिसको बचाया था ना आर्थर एंड डच फर्स्ट एपिसोड में। बोल रहा था कि सीरी का आंखों में एक अजीब से गुस्सा दिखाई दे रहा था। आर्थर चार्ल्स को बताया क्यों ना हो, उसने उसका पति खो दिया, घर खो दिया, और एक बार हमारा गैंग नॉर्मल हो जाए उसके बाद देखेंगे सीरी का किया क्या जाता है। फिर होशिया के बारे में भी बोल रहा था आर्थर कि वो बहुत ज्यादा पीने लग गया। तो आगे से तो नहीं जा सकते, सामने एक खतरनाक भालू खड़ा हुआ है। Must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. तो आर्थर का कहना है कि उस भालू का अंदर बहुत सारा मीट है, तो हम उसका शिकार कर सकता है। लेकिन चार्ल्स ने बोला हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा मीट है, इसीलिए हमारा लक को आजमाने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी भालू को देख के लग रहा है वो बहुत भूखा हुआ है। तो भालू उस साइड है, तो हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। वाह, इसका क्या हुआ बे? शायद भालू को देख के डर गया होगा। अच्छा अच्छा, तो आगे जाके भी घोड़ा ऐसा डर सकता है और मैं गिर भी सकता हूँ। तो घोड़ा को जब भी डर जाए तो उसको शांत कराना होगा। We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that. Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. Careful. You want me to move on? No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. What's wrong, Art?
back to what you were saying. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. Or never. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us तो right. चार्ल्स ना इन लोगों के साथ 5-6 महीने से सेव है। तो आर्थर कह रहा है मुझे ऐसा लगा कि कांड होने के बाद तुम एक गैंग छोड़ दोगे। How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. तो ये बात पता चला कि डच की घोड़े का नाम एक काउंट और वो डच के अलावा किसी को बैठाता नहीं है। और चार्ल्स बता रहा था कि वो अकेला काम बहुत टाइम से किया है और उससे हमेशा डर रहता था इस बात में कि वो सोया रहेगा उसको नींद में कोई मार ना दे। और चार्ल्स ये भी कह रहा था जो भी हो जाए इस गैंग को कभी छोड़ेगा नहीं, भले ही थोड़ा कांड हो गया वो तो कभी न कभी होना ही था। ऐसे डच और इस गैंग का ज्यादातर लोगों का मेरे साथ बिहेवियर अच्छा ही रहा है। और फिर आर्थर बताने लगे वो इस गैंग के साथ 20 सालों से है और डच ने आर्थर को पढ़ना सिखाया है, बल्कि जॉन को भी पढ़ना सिखाया है। एक्चुअली डच और होसिया ने आर्थर को बहुत कुछ सिखाया है और इन दोनों का कहना है कि डच सबसे अलग से एक इंसान है। Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. चार्ल्स को आर्थर थैंक यू बोल रहा है क्योंकि चार्ल्स ने आर्थर को तीर और धनुष अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाया है। वो आज के पार्ट यहाँ पे ही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।